नमस्कार आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी को स्वागत। हेलो एवरीवन, तेले आज आईसीटी क्लास हमें स्टार्ट करबा। आज हमें यूनिट-2 रो लास्ट दुईटा बिट कवर करबा। तेले आज हमें पढ़िबा एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और लर्निंग। तेले कौन रही एडवांटेज देखिबा और तापरे तार लिमिटेशन देखिबा। तेले फर्स्ट देखो, लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इन प्रोग्राम लर्निंग। देखो लर्निंग कहीं इफेक्टिव थाए प्रोग्राम लर्निंग रे, कहीं ना सिंस द लर्नर इज कंटिन्यूअसली माने एक्टिव। तले एठी कोन हुए, आम ट्रेडिशनल क्लास रे जेमती पिलाटी केवल पैसिव लिसनर थाए, एठी किंतु से भली हुएनी। एठी लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है लर्निंग प्रोसेस रे। सेति पई एठी लर्निंग प्रोसेस टा बहुत इंटरैक्टिव एंड इफेक्टिव मध्य। तापरे कोन अछि ना, पेव द वे फॉर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। एटी इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन टा सुविधा होची, काहे कि ना एठी समस्ते बा पिला माने निजर ओन स्पीड बा निजर ओन पेस रे सिखुचंती जिंस। कहा ऊपरे किछि भी टाइम माने हमर बर्डन रोहुनी, एतके टाइम ऊपरे सारिया को पड़िबो कि समस्त को समान स्पीड दरकार, सेमती किछि नाही। तने समस्त निज निज स्पीड अकॉर्डिंगली सिखि पारुचंती। तापरे कौन अच्छी एठी लर्नर को हेल्प मिलूची, दीटा बाटरे हेल्प मिलूची। कौन कौन मिलूची, फर्स्ट टीचर ताको जते बळे किछि क्वेश्चन पचारचंती, जति लर्नर भाबिया को किछि टाइम नउची देन ताको प्रॉम्प्टिंग करूचंती, किछि क्लूज दउचंती। ता द्वारा कौन होची ना, लर्नर को सुविधा होची। जदि से जानिछि आंसर ताल से इजीली मने पकई पारुचे, जानिछि किंतु भूली जाइछि, ताले जतले टीचर प्रॉम्प्ट करिवे तार मने पड़ी जीव आंसर टे। एमती हेल्प मिलूची। आउ केमती वे रे हेल्प मिलूची, और बाय प्रोवाइडिंग रिमेडियल इंस्ट्रक्शन। अदरवाइज कौन होची, टीचर जति देखिले स्टूडेंट टी वीक अछि को एरिया रे जानि पारले ताल ताको रिमेडियल टीचिंग बा रिमेडियल इंस्ट्रक्शन दोचंती। तो टीचर स्टूडेंट को बा लर्नर को एठी हेल्प मिलूची। नेक्स्ट, लर्निंग इज इजी इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग। कहे कि ना लर्निंग मटेरियल अरेंज स्मॉल मीनिंगफुल स्टेप्स। इटी कौन होची, लर्निंग मटेरियल गुडिक स्मॉल स्टेप रे सब अरेंज हेची बा फ्रेम जोडा को हमें कहउचंती। एंड कंटेंट इज अरेंज इन सच ए वे दैट द लर्नर लर्न बाय अवॉइडिंग एरर, नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इटी कौन आ गोटे सुविधा होची, लर्नर रो जो एरर टा अवॉइड हे पारुची बा कमा जाय पारुची। आउ ट्रायल एंड एरर मेथड अनुसार नुहे, बरम किसी क्लूज देखी हो कि हिंट देखी हो। ता सहित आउ कौन कर जो लर्नर को रिमेडियल क्लास प्रोवाइड करा जाउची, तार माने वीकनेस टा को ओवरकम करया पई सेटा सुविधा होची। द कंटेंट अरेंज्ड यूजिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। आउ एठी टीचर कंटेंट को केमती अरेंज करथांती, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। माने इजी टू कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट पिला मानन को इजी जिंस पढ़ा जाउची, देन कॉम्प्लेक्स। या द्वारा कौन होबो, सहजर चित्र में कष्ट को जीवा हमको इंटरेस्ट बढ़ी बढ़ी आसीबो, डाउट सहजरी क्लियर हेका जीवो। तो एई भलिया वे रे हम जदी पढ़ेबा बा पढ़िबा पाठटा सहज लागिबो, पिला माने जल्दी बुझी पारिबे। Immediately after answering the frame, the student will come to know whether his response is correct or not, or immediate reinforcement is possible. आउ कौन करा जाउची, जते बड़े इमीडिएट आंसर दोची स्टूडेंट, तथा तार आंसर बा रेस्पॉन्स ठीक अछि ना भूल अछि स्टूडेंट को जाना जाउची बा फीडबैक दिया जाउची। फीडबैक पाइला परे इमीडिएट रेनफोर्समेंट माने रिमेडियल क्लास प्रोवाइड करा जाउचे। डेवलप गुड हैबिट्स इन पीपल, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड ऑनेस्टी। पिला मान को भितरे गुड हैबिट भर जाई पारुची बा अना जाई पारुची, भले भले चेंज अना जाई पारुची, जोटा तांको भितरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाउची, से माने सेल्फ रिलायंट होचंती एंड ऑनेस्टी। एई टाइप रो बहुत गुडे गुड वर्च्यू से मान को भितरे आसी पारुची। Once the program is prepared and tested on pupils, it can be used at any time, at any place.
सपोज ए प्रोग्राम को आम इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को आम तैयारी कले प्रिपेयर कले एंड पिला ऊपर टेस्ट कले बा इम्प्लीमेंट कले तापर कौन है आम को भी टाइम रे को भी प्लेस रे आम ताको यूज करि परिबा। Since the program is developed by expert and creative teachers, it provides quality teaching to people. And एटा जो हमर मेथड को एक्सपर्ट माने बा क्रिएटिव टीचर माने डेवलप करिसंती सेति पय कोन होची एटा हमर एजुकेशन नो क्वालिटी बढ़े होची तापरे हमर जो टीचर क्वालिटी बा टीचिंग क्वालिटी को मध्य एनहांस करूची। Personalized learning is a method of self-instruction or self-learning. ये टीचर काम होची as a guide or path provider. Student ये कौन self directed ठीक अच्छी निजे निजे को से instruction दे परिवा को able. It helps in eradicating the evil of copying during examination. जो रोट लर्निंग बा कपिंग इन एग्जामिनेशन यही सब जिनस को इराडिकेट करिया पाई पर्सनलाइज लर्निंग बहुत हेल्पफुल है सॉरी प्रोग्राम लर्निंग बहुत हेल्पफुल है। पॉसिबिलिटी फॉर रिफ्रेमिंग द प्रोग्राम व्हेनेवर पॉसिबल जिते दरकार थी आम आउ थे रिफ्रेम करि परिबा बा रिफॉर्म करि परिबा चेंज करि परिबा दरकार अनुसार आमे करि परिबा तो एति की फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम रे रहिछि। देयर इज ए फैसिलिटी ऑफ रिवैलिडेटिंग एंड रिविजन ऑफ प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट रेस्पॉन्स। स्टूडेंट मानकर रेस्पॉन्स ऊपर डिपेंड करिकि आमे एटा को रिवैलिडेट एंड रिवाइज मध्य करि परिबा। स्टूडेंट मानकर रेस्पॉन्स को नै आमे ताको अकॉर्डिंगली चेंज करि परिबा बा मॉडिफाई करि परिबा। The following standard can be checked and suitable remedial measures can be given with the help of program material. जेमती आम प्रथम डिस्कसन करूले ये आम जो स्टूडेंट गोटे फ्रेम रू आ गोटे फ्रेम को जाऊँगी गोटे फ्रेम रे तार जदि किसी वीकनेस रहीगला प्रथम डायग्नोसिस करागला तापर ताकू रिमेडियल मेजर प्रोवाइड करागला ता माने आउ ताकू प्रोग्राम मटेरियल मध्य बा सपोर्टिंग मटेरियल मध्य प्रोवाइड करागला। It is quite useful in non-formal education and in continuing education. ताले इटा कोठी बेसी useful non-formal and in continuing examination. Distance पाई इटा एते सुविधादायक नुह इटा continuing education ने and in non-formal education ने सुविधा। It develops scientific attitude among the learners as they are able to think rationally and logically. ताले एठी पिलामाननको बा स्टूडेंट मानको अपॉर्चुनिटी दिया जाय थाए से माने रेशनली एवं लॉजिकली भाबी पारिबे आ जदी लॉजिकली भाबुचंती तो तांको भितर गोटे साइंटिफिक टेम्परामेंट बा एटीट्यूड डेवलप करे। इट प्रोवाइड्स फीडिंग मटेरियल टू द सेल्फ इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर टीचिंग मशीन प्रोग्राम टेक्स्ट एटसेट्रा। ताले कोन करूची फीडिंग मटेरियल बा सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करूची कहा को ना सेल्फ इंस्ट्रक्शन डिवाइस जेमती कंप्यूटर जेमती हम लर्निंग टैबलेट टीचिंग मशीन ये सब को माने फीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करूची बा सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करूची। इट मे हेल्प टीचर्स इन द रिडक्शन ऑफ देयर वर्कलोड बा लोड ऑफ वर्क। टीचर मानकू सेमानकर काम को हल्का कराउची टीचर मानकू काम हल्का हो जाउची काना स्टूडेंट माने सेल्फ डायरेक्टेड होचंती टीचर माने केवल असिस्ट करूचंती सो द टीचर मानकर काम हल्का होची। प्रोग्राम लर्निंग इज बाउंड टू yield गुड रिजल्ट एज इट इज बेटर प्रिपेयर्ड एंड प्लान मटेरियल। तले प्रोग्राम लर्निंग होची माने तार जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजीटा गोटे सिस्टमेटिक आ गोटे वेल प्लान से कौन करुच्ची गुड रिजल्ट दौची जोटा भल प्लानिंग रे सिस्टमेटिकली करा जाय थाए तार रिजल्ट बा आउटपुट मध्य बहुत भल आसे से प्रोग्राम लर्निंग रो आउटपुट बा रिजल्ट मध्य बहुत भल आसुचे। इट डेवलप्स क्रिएटिविटी एमंग लर्नर्स पिलामानक भितरे क्रिएटिविटी लॉजिकल थिंकिंग साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करिया पई प्रोग्राम लर्निंग सहायता करूचे। It provides variety in teaching learning process. ताले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो
जो मोनोटोनस बोरिंगनेस को ये काटुची ये कौन दौची भेराइटीज दौची पिला मानक पाखरे बहुत गुडे अपॉर्चुनिटी आछि एंड से बड़ी भाबरे टीचर मानक मध्य माने टीचर मानक पाई मध्य एटा गुडे भेराइटी दौची ओके एई सब तो देखिले हमें एडवांटेजेस एबे हमें ताले देखिबा कोन कोन रहिछि लिमिटेशंस ऑफ प्रोग्राम लर्निंग जेमती सब जिनसर मेरिट थाए एंड डिमेरिट थाए से बड़ी प्रोग्राम लर्निंग रो मध्य केतेक डिमेरिट रहिछि आज देखिना बा टीचर occupies an important place in the teaching learning process but there is no direct place for teacher in this तले एठी कोन होची टीचर करो नॉर्मली टीचर करो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे गोटे इंपोर्टेंट प्लेस थाए किंतु एठी स्टूडेंट माने जेतु सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ लर्निंग ऊपर एम्फासिस दिया जाउची सेति पय एठी टीचर करो किछि डायरेक्ट प्लेस न थाए टीचर टच रिलेशनशिप इज इंपोर्टेंट बट दो प्रोग्राम लर्निंग इट इज नॉट सेम सेंटर एठी जेतु टीचर करो गोटे इंपोर्टेंट प्लेस रहउनी तेनु एठी टीचर लर्नर बट टीचर एंड टच भितर जो रिलेशन ता भलरे एस्टैब्लिश हे पारुनी बा स्ट्रांग हे पारुनी प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल इज क्वाइट एक्सपेंसिव ताले एठी हमें जो लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर माने प्रिपेयर करूछंती एटा माने कॉस्टली होची एक्सपेंसिव होची इट कैन नॉट फास्टर प्रॉपर इट फोस्टर हबो फोस्टर प्रॉपर एटीट्यूड एस्थेटिक एप्रिसिएशन मोरल स्टैंडर्ड ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिया पई एबल किंतु मोरल स्टैंडर्ड को बढ़ाया पई नह प्रोग्राम लर्निंग डज नॉट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन इन पीपल ताले क्रिएटिविटी इमेजिनेशन ए सब को क्रिएटिविटी तो बढ़ होची किंतु कोन होची स्टूडेंट मानकर इमेजिनेशन के स्क्वीज करूची ए प्रोग्राम टेक्स्ट ए मशीन कैनॉट बी एन अल्टरनेटिव टू टीचर एठी होची कोन मशीन रो रहला तो आमे किंतु जदि देखिबा जने गोटे मशीन के भी टीचर कर अल्टरनेटिव हेई परिबनी एटा तार गोटे डिमेरिट lack of training for teacher to prepare qualitative frame एटी टीचर मानक पई सेति की ट्रेनिंग नाही क्वालिटेटिव फ्रेम प्रिपेयर करबा पई बिकॉज ऑफ सेल्फ लर्निंग इट मे एंड इन फैटिग सेल्फ लर्निंग को एटी बहुत गुरुत्व दिया जाउची सेति पई कोन होउची यार रिजल्ट केबे केबे माने एटा कोन लीड करूची फैटिग दोचे lack of availability of program material for all subject सबु सब्जेक्ट को आमे प्रोग्राम मटेरियल देई परिबा नाही कि जो सब्जेक्ट रे पॉसिबल हो जे आमे देई परिबा किंतु जो सब सब्जेक्ट रे पॉसिबल न हो आमे से सब्जेक्ट पाई प्रोग्राम मटेरियल देई परिबा ने ऑर्थोडॉक्स टीचर विल नॉट रिलीव टू एक्सेप्ट प्रोग्राम लर्निंग आज ए मोड ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम एटा होची गोटे एडवांस व मॉडर्न मेथड जेटा कि ऑर्थोडॉक्स टीचर माने जो मानकर के चिंताधारा पुराना काया हे जाउची से माने याको सहजरे ग्रहण करि पारु नांती तले ए सब थिला लिमिटेशन बा डिमेरिट एबे हमें देखिबा चैलेंजेस कोन कोन चैलेंज रहिची जो चैलेंज गुडा को ओवरकम करबा को पड़िबो challenges in integrating ICT in school education ICT को स्कूल एजुकेशन रे इनकलकेट करिया पई कोन माने चैलेंज रहिची फर्स्ट आसुची टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज द टर्म यूज्ड बाय एजुकेटर्स टू डिस्क्राइब इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बोथ बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट तले टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन माने कोन आमे टेक्नोलॉजी को आम एजुकेशन सहित जड़ित करवा ताले इफेक्टिवली यूज करिया पई पड़िबो काहाकू ना टेक्नोलॉजी को किए यूज करिवो टीचर यूज करिवे एंड स्टूडेंट यूज करिवे ता माने एटी कोन ला एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रो हार्डवेयर रे कोन रहला हार्डवेयर रे कंप्यूटर हैंडहेल्ड डिवाइसेस प्रिंटर डिजिटल कैमरा सॉफ्टवेयर एंड कंटेंट एप्लीकेशन ने प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ए सब आसला एंड मीडिया रे आसुची इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटा रहला एग्जांपल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज डिफाइंड नॉट बाय द or type of technology used but by how and why it is used that is a definition
रोडनी इले देइछंती 2002 मसिया रे। तापरे टीचर्स शुड नो दैट टीचर मानको कोन मन रखिया पड़िबो जानिया को पड़िबो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी यूज एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी को हमें यूज करबा पई हमें नॉर्मल टेक्नोलॉजी रो यूज को बुझिले जानले करि परिबा बट टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करिया पई हमको केतेटा स्किल जानिया पई पड़िबो। टीचर्स यूज टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू टीच करिकुलम इन मोर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल वे। टीचर को गोटे मोटिव माने बुझिया को पड़िबो काहे कि टेक्नोलॉजी को से यूज करूछंती। जदी टेक्नोलॉजी को टीचर यूज करूछंती ताल से करिकुलम को माने गोटे भलो मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल वे रे स्टूडेंट मान को पाखरे रिप्रेजेंट करि परिबे। देन रेजिस्टेंस टू चेंज जेताले आईसीटी को आमे इंट्रोड्यूस करूछंती कौन होची ना वेरी ऑफन फ्रॉम टीचर देमसेल्स सिंस दे मे बी वन ऑफ द ओपिनियन दैट दे शैल बिकम रिडक्टेंट एंड अपन टेक्नोलॉजी जिते बड़े टेक्नोलॉजी आसुची सेतले कौन होची हमर टेक्नोलॉजी बहुत किछि करि दोचे। समस्ते माने जमते हमें कहते ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी जदि कार रही जाउची हमें एटा को एक्सेप्ट करि पारु नांती। एजुकेटर देमसेल्स मे बी skeptical about effectiveness of using ICT in school education। ताले एजुकेटर माने मध्य को एक्सेप्ट करिबाटा डिफिकल्ट होची आईसीटी रो यूज को टेक्नोलॉजी माने एजुकेशन ने। देन लैक ऑफ अवेयरनेस हम पाखे सेतिके अवेयरनेस नहीं आउटलुक नहीं टेक्नोलॉजी रो यूज ऊपर हमें समस्ते माने हमें जानि नांती कोठी कोठी यूज करबा कथा जान नांती कहिछि कोन ना देयर इज जनरल लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द यूटिलिटी ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। ताले एक्चुअली आईसीटी रो कोठी एजुकेशन यूज एजुकेटर मानको एवं ट्यूटर मानको सेटा ठीक रे जणा नाही। दिस लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट आईसीटी एंड देयर यूज इन एजुकेशन when on the part of policy makers, administrators and educators makes it particularly difficult to deploy ICT in the field of school education। तले एटा गोटे बहुत बड़ डिमेरिट कहाँ पाखरे अवेयरनेस नाही पॉलिसी मेकर मान को पाखरे एडमिनिस्ट्रेटर्स मान को पाखरे इवन टीचर को पाखरे स्टूडेंट पाखरे कहाँ पाखरे संपूर्ण भाव में अवेयरनेस नाही जोटा कि गोटे हमर प्रॉब्लम बा चैलेंज क्रिएट करूछे। लैंग्वेज बैरियर English is the dominant language of the internet. As estimated, 80% of online content is in English. A large proportion of the educational software produced in the world market is in English. ताले एठी मोस्टली हमें जानले कौन अधिकांश ऑनलाइन मटेरियल सॉफ्टवेयर ये सब इंग्लिश रे अछि तेनु इंग्लिश तेनु समस्त को माने जेते बळे हमें आईसीटी को एजुकेशन सहित कनेक्ट करूछंती हमको इंग्लिश रो प्रोफिशिएंसी बढ़िया पई पड़िबो। अदरवाइज लैंग्वेज मध्य गोटे बैरियर हमको ओवरकम करिया पई हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बढ़िया पई पड़िबो। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स टीचर माने जदि प्रॉपर्ली ट्रेन हेबेनी ताहले से माने सेमान को भितरे जदि ठीक रे कैपेसिटी बिल्ड हे पारिबोनी आईसीटी बा टेक्नोलॉजी को यूज करिया पई ताहले आईसीटी रो प्रॉपर यूज हे पारिबोनी सेति पई टीचर मान को प्रॉपर ट्रेनिंग दरकार सेति पई कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर मध्य गोटे चैलेंज भाबरे देखा दे छै। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन तले हमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन देखना बा। Many of the issues and challenges associated with ICT in education initiatives are known by policymakers, donor staff and educators। ठीक है तले कौन कहूँ कि आम कौटी बेसी देखा दूची प्रोब्लेम आमर आसूची तो केमती ना where evaluation data is available much of the work is seem to suffer from important biases। तो ये आमर बायस कथा आसूची तो इवैल्यूएशन देला इवैल्यूएशन डाटा जो अवेलेबल थाए सेठी से कहूँ कि माने मोस्ट ऑफ द वर्क कौन होता है सफर फ्रॉम इम्पोर्टेंट बायसेस रो सफर करे। अनदर प्रॉब्लम इज इन दिस एरिया इज द लैक ऑफ ए कॉमन सेट ऑफ इंडिकेटर्स फॉर आईसीटीज इन एजुकेशन।
सब बेले इंडिकेटर माने कंपोनेंट माने अभाव थाए ICT एजुकेशन सेटअप रे and where data has been collected it is often quantitative data related to infrastructure rather than data that help to the policy makers again impact of ICT intervention on student learning से कौन कहूँ आम जो डाटा भी मोस्टली आणुचंदी सेटा हला क्वांटिटेटिव डाटा जोटा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जमती नंबर ऑफ कंप्यूटर नंबर टेक्नोलॉजी सफिशिएंट अच्छी ना नहीं टेक्निकल डिवाइसेस कंप्यूटर स्टडी आमर स्मार्ट बोर्ड सब किछि अच्छी ना नहीं स्टूडेंट को स्ट्रेंथ को देखिके से सब ऊपर if ICTs are to become effective and integral tool in education and if accountability is to be demonstrated to donors and stakeholders, monitoring and evaluation must be a priority area of focus. से कहूँ कि monitoring and evaluation importance बुझाऊे. Another critical issue with the uses of ICT in school is the implementation of new technologies without having analyzed their appropriativeness, applicability and impact on various environments and contexts. तो ये सब बुझाला कौन आ गोटे इश्यू होची कि ICT रे यूज को आमे जो नौचंती आमे एनालाइज करू नांती कि तार केते एप्रोप्रिएटनेस रहिची एप्लीकेबिलिटी को जगह रहिची ए सब को देखा जाउनी. इन मोस्ट कंट्रीज पर्टिकुलरली द लास्ट डेवलप्ड वंस दे मस्ट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स but must also use in technology to respond to their own needs and not just follow trend. तो से कहूँ कौन आम टेक्नोलोजी को मोस्ट ऑफ द कंट्री कौन यूज करिया कथा निजर नीड को फुलफिल करने माने टेक्नोलोजी थ्रू रे आम जमते एजुकेशनल नीड फुलफिल होतबो केवल गोटे ट्रेंड को फुलफिल माने फॉलो करिया पई नुह. तापर आसला कौन इंटरनेट यूज एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट. इंटरनेट यूज हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. Providing internet access to every student is a very expensive. समस्त को इंटरनेट दबाटा गोटे एक्सपेंसिव टैक्स कारण तार किसी चार्जेस रही एंड गवर्नमेंट स्कूल्स रे गवर्नमेंट को सेटा फुलफिल करिया पड़े. This is more so in the case of rural centers and remote areas where internet connection are bound to be erratic if available at all. ताले कौन होचे आमे जदि रूरल एरिया कथा देखिबा बा इंटीरियर जगह कथा रिमोट एरिया कथा देखिबा इटी इंटरनेट कनेक्शन भलो न थाए तार स्ट्रेंथ न थाए. A different challenge another when it comes to internet use is the effort involved in monitoring the student use to internet ensure that they do not visit educationally irrelevant and socially undesirable sites. तेतले सब पिला मानन को एक्सेस दिया जाउची हमको देखिया कोन पड़िबो पिला माने केवल एजुकेशन को रिलेवेंट साइट गुरिका देखुचंदी बोली से माने विभिन्न प्रकार सोशली अनडिजायरेबल साइट जदि देखुथिबे ताले एटा गोटे नेगेटिव इंपैक्ट पकेबो तांको मोरल को तांको एथिक्स को मध्य अफेक्ट करिवो. तापर आसुची मेंटेनेंस. The problem most often noted by the teachers was the maintenance of equipment needed to operate a technologically enhanced school. गोटे स्कूल भाव से टेक्नोलोजिकली बहुत एडवांस बहुत गुड़ा इक्विपमेंट्स अच्छी तो तार माने तार देखाशुना बा मेंटेनेंस सेमती आमको देखिया पड़ो. तापर आसला इनइक्वालिटीज. Another frequently mentioned problem was the disparities between students who have to access computer at home and those who do not. आ गोटे कौन है इनइक्वालिटी जो मैंने घरे कंप्यूटर रखिथे यूज जानी थे से भितर आ जो कंप्यूटर नथिबो से भितर गोटे इनइक्वालिटी मध्य आसे. नीड फॉर ट्रेनिंग. कंप्यूटर पई आम जो टेक्नोलोजी काम करने आमर टीचर मान को टेक्नोलोजी को माने एक्सपीरियंस हवा को पड़ो ट्रेंड हवा को पड़ो एतिपई से ट्रेनिंग आवश्यकता रही. तापर आसला इनफॉरमेशन ओवरलोड. इनफॉरमेशन ओवरलोड रे कौन है teachers recognize that sometimes student teachers are overwhelmed with the amount of information available and with the task of filtering through the information. माने टीचर और स्टूडेंट को कौन है से बेले बेले कौन हुए बहुत गुड़ा इनफॉरमेशन अवेलेबल थाए आ टैक्स थाए जोटा माने माने इनफॉरमेशन थ्रू रे जानि परिबे. तापरे पेस ऑफ चेंज एंड स्ट्रेस. टीचर्स हैव ए हार्ड टाइम कीपिंग अप विथ द पेस ऑफ चेंज. People are stressed. This level of stress is transformed to young students. से कहूँ स्ट्रेस कथा चेंज कथा माने टीचर मान मान जो चेंज को लेकिन से चेंज सहित निजक एडप्ट करने माने किछिटा माने स्ट्रेस नवा को पड़ुछ.
मते गोटे चैलेंज तापरे प्लेगरिज्म The problem of increased plagiarism arises because technology was making it easy to reproduce and revise someone else's work. There is a lot of cutting and pasting going on. कौन होची समस्त कट पेस्ट करूछन कॉपी पेस्ट करूछन तो सेइथ में हमें प्लेगरिज्म टेस्ट करंती ऑथेंटिसिटी चेक करिया पाए किंतु टेक्नोलॉजी हेल्प रे कोन हो हम विभिन्न साइट जिंस खोजंती और ताको कॉपी पेस्ट कर देंदी कि तो एइट हेले प्लेगरिज्म सेइथ पई करा जाउछ प्लेगरिज्म टेस्ट टीचर्स टाइम टीचर्स stated that IT was placing more demands on their time teachers noted that extra time was needed to learn new software टीचर मान को ट्रेन होगा पड़ुची से मान को नुआ सफ्टवेयर नुआ 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 जिनस जाना ट्रेनिंग जावाक पड़ुची जोटा कि टाइम लोड पकाउची बा टाइम अधिक कंज्यूम करुचे तापर आसिला फेल्यूर टू यूज एटा यूज हेबो फेल्यूर टू यूज टेक्नोलॉजी failure to use technology to deliver effective formative assessment ताले formative assessment पाई टीचर माने फेल्योर केमते सेथरे assessment is an important drive for technology and important drive for educational practice आमे जानि छथि assessment evaluation ए सब रे इंपोर्टेंस केते रही छि एजुकेशन change and over the last years we have seen welcome rise in the use of formative assessment in educational practice हमें formative assessment काहे के यूज करछंदी as a mean of continuous comprehensive assessment we use formative assessment however there is still an assessment gap in how changes in curricula and new skill demands are implemented in education तले या भीतर गोटे गैप रही जाउची हमर करिकुलम रे जो चेंज होची ता सहित कोन हम जो जिंस स्किल डिमांड करूछंती ए भीतर schools do not always make necessary adjustment in assessment practices as a consequence of these changes ताबरे माने सब बेले कोन होची जोटा कि हमर पॉसिबल हे पारने स्कूल पे simple applications of digital media tools like webcams that allow non disruptive peer observation offer considerable promise in giving teachers timely feedback they can use तो एठी असेसमेंट हमें जदि हमें टेक्नोलॉजी तारे करूछंती तार कोन कोन रहिछि एडवांटेज सेटा हमें देखले cost of technology its rapid evolution and the special knowledge and skills required to its users pose substantial barriers to effective utilization तले टेक्नोलॉजी पई हमको सेति कॉस्ट देबाको पड़िबो तार मेंटेनेंस चार्ज रहिछि हमको ट्रेंड होबाको पड़िबो टाइम टू टाइम हमको रिफॉर्म करियाको पड़िबो when attempting to integrate tool teachers typically encounter many barriers तले एई भली भाबरे बहुत बैरियर रहिछि आमे जतरा आईसीटी को हम एजुकेशन ने कनेक्ट करूछंती आईसीटी थ्रू रे हमें माने हम एजुकेशन को आगौचंती सेते माने टीचर को बहुत बड़े बैरियर को फेस करिया को पड़ुछ बैरियर गुडा माने चैलेंज को फेस करिया को पड़ुछ तले एठी आज सॉरी गले हमर यूनिट 2 नेक्स्ट हमें यूनिट 3 पढिबा तले आज रो वीडियो रे हमें जो भी पढिले एडवांटेज ऑफ प्रोग्राम लर्निंग डिसएडवांटेज तापर लिमिटेशन तापर हम पढिले चैलेंज तो ये वीडियोटी बहुत इंपोर्टेंट थिला समस्त भल भाव देखा सहित यूनिट 2 कंप्लीट हो गला यूनिट 2 को भल भाव प्रिपेयर करनियंतु तले आज रो क्लास का मैं रखिबो पुणी नया क्लास रे देखा थैंक यू एही परिका फ्री क्लासेस पई आम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं पाखे थिया बेल आइकन बटन को क्लिक करंतु।